Hello and welcome to Corporate Cup presents DAFA News podcast, and a very special day for us at this podcast. Along with myself and Sanket, we have a special guest today in Gulshan. So Gulshan, a very warm welcome to the DAFA News podcast, and Thank you so much. It's a pleasure. It's a pleasure being here. Thank you. thank you so much for taking the time out today, and we have this podcast to discuss about all great things that are happening with Indian sport right now, and especially the marquee tournament that's happening currently, which is the T20 World Cup, in down under. So we have been running this podcast for almost about 10 days, including today, and massive response is what we are getting from the fans. And good to have you today on this Thank podcast. you. And And I am one of those fans. I've been watching on Insta regularly. right. So the idea is that we can sort of engage with people and talk about the sport, of course, the sport that we all love, which is cricket, and of course, we've talked about the other sports such as ISL. So today we are basically going to just have a quick chat about what we feel the Group B games today were. They were pretty exciting games between Scotland and Ireland and West Indies and Zimbabwe. So, I know for a fact that, you've been a cricketer yourself. You were in the Delhi camp, under 16 camp. So, it's always good. We have all played cricket at some point in time. So, so excited to hear talk Of course, about that's cricket the instead passion. of playing. Yeah. And I Yeah. know for a Of fact course. that you keep playing also these days. Yeah. It's been 4 years. I've been playing regularly. Either I go to gym or I just play cricket. So that's the passion I have found again. And that's why I'm here too. I can just talk about cricket all day. Amazing. I mean, it just sort of, it's a sort of great to have, people who are so passionate about the game. We all are. It's sort of like a, religion in this country, and we all love this Yeah. game so much. And And although, in our yeah, acting circle, we have a saying: कि most of the actors are frustrated cricketers because there are so many of us who once wanted to be a cricketer, and so many I'm sure. of my friends who play cricket, they have played with Virat Kohli and all. They have played Ranji on a high level. One has played Mr. Salil Ankola. He has played for Correct. India. Correct. So there are so many players. I'm sure. I mean, when you guys get together and play cricket as actors and celebrities, I think you guys don't talk about movies and OTT And series. not You at talk all, not about at all. what happened at the Cricket, game. yeah, obviously we just forget wherever we are. That time we are just concentrating on cricket only, either on our game or what's happening around the world. No, absolutely. I think this is a game that binds us all, and it's wonderful to see among the film fraternity. There is so much of sort of uptake in this game, and you guys are actually playing this regularly. And as you said, you guys discuss about what's not just happening at the game that you are playing, it's also Yeah, about the game that's happening all across the world. So in likewise, we know that the T20 World Cup is taking place in Australia right now, and we would sort of jump in to discuss one of the important matches today. yeah. Scotland versus Ireland, which was the first game in Group B. Scotland won the toss and they elected to bat. A bit of a surprise for myself. Sanket, what do you think? What was your thoughts about them electing to bat first? We exactly discussed the opposite yesterday. I probably wanted Scotland to win, but I was okay with Scotland choosing to bat. They are a team who puts on a score and then defends it through the tight bowling, and they had a good score on the board. But today was a Yes, day when one player played a freakish innings, probably one of his best. So that is acceptable. If you get to see good cricket, that is acceptable. yeah, absolutely. And I think before we sort of jump into how Ireland played, I think you had Michael Jones, who didn't have a great game against the West Indies earlier, scored only about 20. He almost scored 100 today, 86. Yes, he probably scored 100. One good thing to watch about his innings was his wrist work against the pace bowlers and against the spin bowlers. It was looking like an Indian player playing out there. Absolutely. And
six fours and six fours and four fours, four sixes, sorry. And but the good part is that he got support from Matthew Cross, Richie Barrington, and Michael Lesk. The only guy who didn't fire, who fired in the last game, was George Munsey today. Yes, probably speaks about the batting depth for Scotland, and that was one of the reasons they elected to bat. And they almost got home. Gulshan, I mean, 176 for 5 is not a bad score in a T20 tournament. And I think any team would back yourself. What do you think? But that's what T20 is. Just one good over, just one player has to click, and the whole game changes. Just one player has to click, and that's what happened in today's game too. I don't know. I forgot the name of the guy who scored 86. Michael Jones, I guess. Yeah. Jones, yeah. तो एक ही प्लेयर यार मैच बदल देता है, तो वही आज भी हुआ. Absolutely. But one good thing about both of these teams and all the new teams which are fighting for that spot, they are full of hunger. Like if you see their fielding, the catches, मतलब normally आजकल इतना catches drop होते हैं, but I saw their fielding, मतलब impossible catches भी कर रहे थे वो लोग. तो उस दिन वेस्ट इंडीज से भी I guess वो सिर्फ अपना फील्डिंग की वजह से जीते थे. Absolutely. So, hunger can be seen. Absolutely. And I think ये जो getting the coveted spot है आपका Super 12 में, वो बहुत ही एक sort of important place है इन नई टीम्स के लिए, खासकर की टीम्स like Scotland, Ireland, UAE, Zimbabwe भी कहूँगा, because this Zimbabwe is not like the Zimbabwe or older times. Yeah, the Andy Flower brothers and all of those, Paul Strang, Andy Flower, वो जो लोग थे जब खेलते थे. Heat streak. Yeah, absolutely. Yeah. And Henry Olonga, yes, of course. And I think ये टीम जो है वो उस तरह की टीम नहीं है, but फिर भी वो हंगर उनमें दिखी थी पिछले मैच में. फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है, काफी टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि ये वो टीम हो सकती है. नहीं, बिल्कुल ये बन सकती है, इसमें वो बात है. एंड आई थिंक ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस देयर नॉट सो ग्रेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बट आई थिंक मुझे जो लगा कि उनका परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं था. एंड परहैप्स आई थिंक व्हाट दे हैव, हाउ दे हैव परफॉर्म टुडे, व्हिच वी विल डिस्कस लेटर, कि वो शायद वेस्ट इंडीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रन रेट पे. सो आई थिंक अगर हम आयरलैंड की भी बैटिंग की बात करें तो आई थिंक उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था. आई थिंक दे लॉस्ट अबाउट गुड 4 क्विक विकेट्स फॉर अप टू 61 रन्स, but again a great inning which Sanket, you said, Curtis Campher, which was helped by George Dockrell. I think fantastic partnership, all saw the team through right for, it was almost a 120 run partnership. Yes, probably this is the one thing which you imagine the less in T20 cricket, कि आप 4 डाउन हो 60 रन्स पे 110 120 रन चाहिए. This is a thing which happens rarely, probably 1 in 100 matches. And Curtis Campher, जिसका स्ट्राइक रेट खुद 128 का है, इससे पहले 150 है T20 क्रिकेट में. So no one imagined, neither the Scotland management imagined this, but he played well. I think that is what makes the game unpredictable. Yes. I think जैसे मैं हर बार एक नया हीरो इमर्ज होता है. Absolutely. And यहाँ पे आप देखेंगे कि उनका जो चौथा विकेट गिरा था 61 पे, वो 9.3 ओवर यानी कि 10th ओवर में गिरा, और उनको तब भी जीत के लिए ऑलमोस्ट 119 रन 120 रन की जरूरत थी. 181 दे हैड टू स्कोर. सो आई थिंक व्हाट दिस एसेंशियली टेल्स इज कि उन्होंने 10 ओवर के अंदर 120 रन के ऑलमोस्ट मारे और एक विकेट भी नहीं गवाया. सो यस, एक तरह से फ्रीकिश इनिंग कह सकते हैं, बट आई थिंक वी शुड गिव देम द ड्यू, बिकॉज आई थिंक दे हैव केप्ट आयरलैंड इन द हंट for this tournament, and Ireland's next match is going to be against West Indies, and वहां पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. So either they move or they put West Indies out, even if they don't give the advantage to West Indies. वही होगा probably with Scotland and Ireland match. It was players performing well and the one who played well won the match. दूसरे मैच में उल्टा था, जो सबसे ज्यादा खराब खेला वो हार गया. Mistakes दोनों innings में थी. Correct. A match full of mistakes. Absolutely. I think, but this kind of opens up the group. I think we'll just dive into the next match before we get to the run rate, because I think मेरे लिए
इस ग्रुप का जो कॉम्पोजिशन अभी है, एंड आई विल शेयर विद आवर व्यूअर्स एज वेल, इस ग्रुप का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ा हुआ है. So before we do that, let's dive into the match, which was the other match of the day. A must-win game for West Indies, uh, especially after their disastrous performance against the Scotland team earlier. मतलब किसी ने भी सोचा नहीं था कि वेस्ट इंडीज अपने ओपनिंग मैच में स्कॉटलैंड से हार जाएगी. तो यहाँ पे एटलीस्ट उन्होंने कम बैक किया है. And what I can see essentially is that it was a and they, I think again Sanket, I think I got the thing this time. You said West Indies might choose to bowl first. They did not. They chose to bat, and they सब backed प्रेडिक्शन ही themselves गलत on जा this रहे one. हैं. सब प्रेडिक्शन ही गलत जा रहे हैं आज. Let's not बट talk वेस्ट इंडीज के लिए आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. वेस्ट इंडीज एक लौती ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है हर फॉर्म में, हर हाँ लाइक चीज में. सही बोला आपने. लाइक कुछ भी कर सकते हैं. वेस्ट इंडीज कुछ भी कर सकता है. 154 का टारगेट एंड तुम ओपनिंग ओवर इसको देते हो अपने ओपनिंग बैट्समैन मेयर्स को. यू हैव जोसेफ, यू हैव ओबोद मैको, यू हैव वो होल्डर. तो उनको दे You दो have Jason Holder. तीन तीन and अच्छे बॉलर्स. you should have seen the face of Alzari Joseph while he was getting hit for those fours and sixes. You should have just seen his face. It was telling everything. तो Absolutely. I guess थर्ड क्वार्टर तक तो वेस्ट इंडीज हारा ही हुआ था. वो तो फिर बाद में उसने कमबैक करवाया अल्जारी जोसेफ ने. बट वो मैच गया हुआ था. प्लस वेस्ट इंडीज की टीम वो लग ही नहीं रही थी. वो कॉमराडरी और वो सब लग ही नहीं रहा था उनको देख के. एक टीम वाली वो यूनिटी और वो सब लग ही नहीं रहा था देख के. पता नहीं वो दे समहाउ मैनेज टू विन. बट एंड तक मुझे नहीं लग रहा था कि वेस्ट इंडीज जीतेगा. जिम्बाब्वे No, हारा I think जिम्बाब्वे हारा है. absolutely. वेस्ट इंडीज जीता नहीं है. Actually. जिम्बाब्वे हारा है. करेक्ट. Actually, and the way West Indies was going, I agree with you guys. I think the only thing that went in West Indies' favor, according to me, was the constant regular fall of wickets. And I think फॉलो they got Sikandar Raza for 14, which was, I think, a godsend for them in this match. करेक्ट. सिकंदर रजा इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. Absolutely. And Whether जिस it's तरह से उसने bowling or last batting. match, जिस तरह से लास्ट मैच उसने जिताया, अगेंस्ट द आयरिश टीम, आई थिंक ही वाज द गाय हु एक्चुअली टुक जिम्बाब्वे होम. बट इस बार जैसे No doubt. कोई भी पार्टनरशिप वैसे बन नहीं पाए, चाहे ओपनिंग रन They were going for correct. They were going for glory shots. एब्सोल्युटली पार्टनरशिप नहीं बनाने को इतना रिस्क लेने का जरूरत ही नहीं था. वो विकेट जा रहे हैं फिर भी वो जस्ट हिट करने ही जा रहे थे. I think this kind of sets up a very interesting sort of I mean, Alzari Joseph, yes, you mentioned him. He got 4 for 16, the best bowler for West Indies today. And जैसे मैं देख रहा हूँ कि this kind of sets up the group in a very very interesting situation. अगर मैं बात करूँ टेबल की, तो यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे कि चारों टीमें 2-2 पॉइंट्स, एक मैच जीत के एक मैच हार के 2-2 पॉइंट पे खड़ी हुई है. स्कॉटलैंड इज एट 0.759 रन रेट. जिम्बाब्वे इज बेसिकली एट 0 बिकॉज ना उनका जो एग्जैक्ट रन रेट था, प्लस था माइनस था, वो सेम हो गया. एंड वेस्ट इंडीज इज नेगेटिव एंड आयरलैंड. एंड लास्ट जो 4 मैचेस हमारी आज बची हुई हैं, essentially sorry, लास्ट जो 2 मैचेस बची हुई हैं इन दोनों टीमों की, which is basically Scotland versus Zimbabwe and West Indies versus Ireland, that's set up for some fantastic cricket on Friday. Yes, probably it's a two knockoff matches. The winners are going through. Scotland, West Indies and Zimbabwe Ireland. Net run rate decide करेगा उनका position and कौन से group में जाते हैं. Probably as an Indian fan, I don't want West Indies in my group. Of course. कुछ भी कर देगा. As Gulshan No, said. that's what Gulshan was saying. They're the most On unpredictable the given day. Yeah. on the given day. Of course. So you don't want to be on West Indies' opposing side when West Indies is essentially having a great day. Of course. Because No, उनका I गेम खेलने का स्ट्रेटेजी ये है कि हमें 20 छक्के मारने हैं. absolutely 120 बॉल्स में से 20 छक्के मारने हैं. बाकी जो अपने आप आ जाए, सिंगल डबल आ जाए. तो जिस दिन वो 20 छक्के लग जाते हैं तो उस दिन तो वो फिर ले ही जाते हैं वन साइडेड मैच. वानखेड़े में लग गए थे ना. देखो वेस्ट इंडीज के ना 2 बार लगे हैं जितने किसी और के नहीं लगे हैं T20 वर्ल्ड कप में.
तो तभी they are the only guys who have won it twice. It kind of reminds me of the coincidence जो पहले हुआ था एक टाइम पे कि वेस्ट इंडीज 2 वर्ल्ड कप जीती थी और तीसरे वर्ल्ड कप में फाइनल में, बट 83 में कुछ और ही हो गया. Correct, correct. So I think it sets up a fantastic set of matches. I think my predictions were West Indies and Scotland, West Indies and Ireland, sorry, to qualify from this group. Sanket, what was your prediction? Who would qualify from this group according to you? Mine was also West Indies and Ireland itself. But looking at how West Indies are playing, I don't want them to qualify. Like वो qualify नहीं करेंगे जब जाके नहीं उनका नहीं, you cricket don't want उधर है. them, that is different. नहीं You नहीं, tell me. I see Scotland and Ireland qualifying. Oh, okay. Yes. क्योंकि Gulshan, what's your prediction? Who's Same here, qualifying same from here, this same group? here. Same here. Scotland and Scotland and Ireland. Ireland, and even I want them to because of their hunger and the Hmm. way they are playing. They are giving just all their heart out. So I just want them to go ahead. Yeah. No, absolutely. I think this kind of sets up a fantastic Friday, as we call it. And I think जिस तरह का क्रिकेट अभी बाकी है इस टूर्नामेंट में, of course we have some interesting matches coming up tomorrow, sort of the final matches in this group, which is essentially Namibia versus UAE and Sri Lanka versus Netherlands. I think वो भी बहुत interesting matches होने वाले हैं. It's again a sort of a do or die match for Sri Lanka after losing to Namibia in their first match, which was a big upset, as we all know, the first upset on the first day of this World Cup. और मुझे लगता है कि Sri Lanka has all to play for. So, anyways, let's before we disperse, what's your prediction, Gulshan, for which are the two teams going to qualify from the Group A, which is Netherlands, Namibia, Sri Lanka, and UAE, of course, doesn't have much of a chance. So, I guess among the three, Sri Lanka and Namibia. I think so. well, I am, Sanket, what's your prediction? Yes, same Sri Lanka and Namibia as I told yesterday too. Sri Lanka and Namibia. You think that Sri Lanka is going to have one over Netherlands tomorrow and kind of kick them out? Yes, they would have. They got their mojo back in the last game and realized they are the Asia Cup champions, and probably they will play the best game tomorrow. And Namibia is playing really good cricket. Like from the 8 teams involved over here, they are playing the best cricket, I guess. No doubt. Yeah, No I mean, yes, absolutely. I agree to that. And I think that is something which is going to a little bit of a tough luck against the Netherlands team last time, but it was a close match again, just like they had with the UAE also. And, I also think that for me, Namibia and Sri Lanka would be favorites. And I think somehow Namibia might just top the group, which effectively, takes us to our sort of prediction that हम लोगों को श्रीलंका जब नंबर 2 आएगी तो वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका वाले ग्रुप में जाएगी तो हमें एक मिनी एशिया कप देखने को मिलेगा. गुलशन, डू यू थिंक Correct, दैट्स अ correct. गुड prospect and India Pakistan might want to take revenge on Sri Lanka this time? Yeah, of course, of course. That's what first came to my mind when you said it's gonna be in a small Asia Cup. कि बदला Yes. लेने का मौका मिलेगा. ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में वही आया, चलो अभी ये तो हो जाएगा. नहीं नहीं, अब बदला वाले गाने में अलग अलग ट्यून सुनाई देगी. एक संडे से चालू होगी. But वो उस दिन Correct. बारिश बता रहे. There are Yes, heavy that's what rain predictions. आज का heavy भी rain. wash I out don't हो गया know. warm up match. Absolutely, India had a very important games against the New Zealand, and I think I was actually very keen to see this game. Especially after the surprise win against Australia, because Australia वाला game actually last 2 ओवरों में जीता गया, and एक ओवर में 2 ओवर में अगर आप कोई गेम जीत लो तो that doesn't really tell you much about the overall performance throughout the match. And it's I would say it's just one of those fluke moments or one of a time moments जिसको कहते हैं, जिसमें आपके 2 ओवर में 6 विकेट गिर गए, मोहम्मद शमी ने 1 ओवर में 4 विकेट ले लिए जिसमें एक रनआउट भी उन्होंने करा. तो ये फ्लूक वाली बात है. बट आई थिंक मैं इस गेम को देखना चाहता था जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आज गेम थी. तो मुझे एक्चुअली में ये देखना था कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रहती है. एंड देन यू कुड हैव सॉर्ट ऑफ हैड अ जजमेंट. यस, वी स्कोर्ड गुड रन्स, 186 कम रन्स नहीं होते ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में. But still, I would have wanted another game under the belt before going into the big game, which is the opener against Pakistan on Sunday. Gulshan, what's your thoughts on that?
about the Yeah. washout today? Firstly, about the Australia, I think I don't know how they managed to play at totally another level when it comes to World Cup and all. Otherwise, the whole year they play just average cricket, and I've seen it for like these 5 6 years, and they just win the World Cup. They just come and take the cup, and Yes, they are never the favorites coming into the World Cup, and they just win both it. 2015 and 2021. I agree to that. Yeah, and the last one also, that Yeah, जो T20 Cup, 2021 UAE T20 World Cup, correct. 2021. Sorry, हाँ वो तो 2021. किस्मत था, तो बस सब टॉस जीत गया फिंच। बट वही किस्मत हो या कुछ भी हो, जीत जाते हैं यार। और अरे अभी तो टॉस ऑस्ट्रेलिया जीतने में के बाद भी 20 ओवर खेलने पड़ते हैं यार। अरे आप देखो ना, 6 टॉस जीता, वो 6 बार चेस किया, जीत गए। एक टॉस हारा, पहले बैटिंग किया, हार गए। तो जो भी था, जैसे भी था, वो जीत जाते हैं, वर्ल्ड कप जीत जाते हैं वो। और पूरा साल बहुत एवरेज क्रिकेट खेलेगा, और इंडिया से हमेशा हारेंगे वो लोग। नॉर्मल ट्राई सीरीज हो गया, ये हो गया, बट वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या हो जाता। No, absolutely. I think it makes it a very interesting prospect जो I think Friday से शुरू होने वाला है. I think you have Australia versus New Zealand as one of the games, and the other game is going to be, the England versus Afghanistan, which is, of course, we know which way that is likely to go. But I think England versus Australia versus New Zealand जो match होने वाला है, वो बहुत ही interesting होने वाला है. That will be the start of the real action in this T20 World Cup. And of course, the big bang on Sunday if the rain gods allow that to happen. अभी तक तो रेन का फोरकास्ट है, बट आई थिंक अगर जैसे हम लोग को लग रहा है और जैसी हमारी प्रिडिक्शंस हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ एक मिनी एशिया कप का जो आगाज होने वाला है संडे से, वो भी एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी होने वाला है. एंड आई थिंक वी आर looking forward to some very exciting cricket over the next 1 week when all of these teams are sort of going to see each other out. I think that makes it very very interesting according to me. What do you guys think? आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का तो मुझे इतना टेंशन नहीं है, मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगा। बट लुक, उसके आगे आई थिंक एक कंसर्न मुझे लग रहा है कि ग्राउंड्स का अपना इंडिया को, और इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट्स, छोटे छोटे ग्राउंड्स की इतनी आदत पड़ गई है कि वो बाउंड्रीज अब कितने बड़े लग रहे हैं। तो अभी भी Absolutely. देखोगे कि कितने 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 बाउंड्री पे ही कैच आउट हो रहे हैं। उस दिन दिनेश I कार्तिक ने think भी yes. इतना अच्छा शॉट मारा। Yeah, absolutely. प्रोबेबली इंडिया का एक्सपीरियंस काम आएगा यार। पिछले सालों में T20 खेले इंडिया ने बहुत यार। एंड प्रोबेबली रोहित एज अ कैप्टन इज टैक्टिकली वेरी स्मार्ट, तो फील्ड प्लेसमेंट में भी ही विल टेक दैट टू हिज एडवांटेज। एंड जो टीम डबल्स एंड अपनी फील्डिंग स्ट्रांग रखेगा, उसको चांसेस ज्यादा रहेंगे। एंड वो ऑस्ट्रेलिया वाले वार्म अप मैच में आई गेस, जैसे दिनेश कार्तिक ने मिड विकेट पे वो कैच आउट हुआ, प्रोबेबली दे विल लुक एट व्हिच शॉट्स दे कैन प्ले, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ज्यादा ट्राई करेंगे, एंड स्क्वायर्स पे सिंगल्स एंड डबल्स पे ध्यान देंगे। आई विल मिस वाचिंग विराट एंड धोनी रन। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड उनके लिए परफेक्ट। ऑफ कोर्स एक ऐसा बैट्समैन चाहिए ही चाहिए बीच में। Absolutely. I think Virat would run, and since हम लोग लंबी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, so how can we not talk about the awesome catch which Virat took off Shami's bowling in the last over? Shit. One-handed. One-handed So, of course, actually वही था टर्निंग पॉइंट, एक वो, और एंड द अदर थिंग वाज रन आउट। करेक्ट। नहीं, उसके बाद दो सुपर्ब यॉर्कर्स भी मारे शामी ने, took out the off stump on both the occasions. And मैं actually, this is something that Sanket and I were discussing also earlier, and I was one of those sort of proponents जो कि पहले दिन से जब हमारा ये पॉडकास्ट चालू हुआ है, तो मैं ये कह रहा था कि आई थिंक बुमराह का अगर कोई रियल रिप्लेसमेंट बन सकता है तो शामी है, बट ऑफ कोर्स शामी ही है। बट बॉल लाल नहीं है ना, बॉल सफेद है, बात वो है। स्टिल बाकियों से तो बेटर वही है, मतलब एनी डे चाहे एक्सपीरियंस कह लो या कुछ भी कह लो। शामी एट हिज बेस्ट नो डाउट, बट उसका बेस्ट आएगा क्या उस दिन, वो थोड़ा सा आई एम नॉट हैविंग हिम इन माय प्लेइंग 11, बट अगर वो है तो आई विल वांट हिम टू प्ले बॉल 3 ओवर्स एट द टॉप। पावर प्ले में 3 ओवर्स उसके बनते हैं। Absolutely. I think see, for me, there are two reasons for having Shami in my playing 11 on Sunday.
And one of the reasons is that the experience, Gulshan, which you just talked about, because वो कहता है ना कि यार फॉर्म टेम्पररी होता है लेकिन क्लास परमानेंट होती है. क्लास परमानेंट होता है. हाँ, तो शामी मुझे लगता है इंडियन फास्ट बॉलिंग में वो एक बात है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू हैव सीन पिछले काफी सालों से वो क्लास फास्ट बॉलर्स हमें मिले नहीं है. अगर आप पिछले 10-15 साल में इंडिया के फास्ट बॉलिंग की बात करें तो वैसे फास्ट बॉलर्स मिले नहीं है हु कैन. यस, भुवी स्टार्टेड वेरी वेल, बट आई थिंक ओवर द लास्ट फ्यू मैचेस इन T20 हम देख रहे हैं कि उसका साथ क्या हो रहा है. सो वी होप दैट कि संडे को लास्ट उनके में साथ ना हो. लास्ट 5 ओवर्स तो बस कोई भी नहीं कर पा रहा है. प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी नहीं है फिनिश जो कर पाए अभी अच्छा. बस उस दिन हर्षल पटेल ने अच्छा डाला. बट आई थिंक अदरवाइज उसका तो उसका उसका एक इशू ये है कि वो ऑपोजिंग टीम के लिए कभी कभी 50 कर देता है. 50 कर देता है काफी. बस वही वो लास्ट मैच में ही उसने अच्छा डाला. अदरवाइज तो हाँ. अर्शदीप भी स्टार्टिंग में अच्छा डाल रहा है, बट फिर एंड में जाके उसे भी समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है. No, I think bowling at the death is a different skill, and that is like, Sanket, I would say not 3 overs, but I would definitely have him 2 overs of the power play for sure Course. with Shami. एक स्टार्ट And देता हूँ. मुझे शामी का इंटरनेशनल T20 में इकोनॉमी 9.5 का है. ओके, बट आई थिंक देखो, आई थिंक यहाँ पे ना स्टैट वाले बड़ा गड़बड़ कर जाते हैं, और हम लोगों ने भी गड़बड़ किया. हमने सोचा कि स्टैट की वजह से श्रीलंका जीतेगा, वो हार गया नामीबिया से. सॉरी, हाँ, हार गया नामीबिया से, और वेस्ट इंडीज हार गया स्कॉटलैंड से. तो मुझे लगता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल. आई थिंक what will come good on the day with Pakistan, especially for India, is the ones who hold their nerve. यस. अगर हम देखें जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया लेटली पाकिस्तान से हारा है, दैट्स ओनली, आई मीन, गोइंग बैक टू द फर्स्ट लॉस व्हिच वाज द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बैक इन 2017, जो फाइनल हम लोग हारे थे, व्हिच वाज द फर्स्ट लॉस ऑफ. एंड आई मीन, आई थिंक मोस्ट इंडियंस के लिए वो एक्सेप्टेबल ही नहीं था कि भाई ये भी हो सकता है, क्योंकि हम हमेशा आईसीसी में उनसे जीत के ही आए हैं, तो बाकी कहीं भी कुछ हो जाए. तो मुझे लगता है कि ये नर्व्स वाली बात है, एंड एक लेवल पे अगर हम हमारा टीम नर्व्स रख पाए उस दिन के लिए, एंड विच इज़ वाई आई फेल्ट कि ये न्यूजीलैंड वाला मैच जो वॉश आउट हुआ, शायद, आई डोंट नो वेदर इसका कोई इम्पैक्ट होगा ना कि नहीं. आई होप नॉट, because in this match at least I would have wanted Rohit and Virat Kohli to sort of get a little bit more runs on the board for themselves. Of course class उनकी है, उसके Actually, बारे में कोई डाउट I think more than Virat, I think Rohit Sharma and KL Rahul. एब्सोल्युटली. I think because विराट का तो वही गेम है. विराट का गेम चेंज होता ही नहीं, और वो हमेशा उसी कॉन्फिडेंस से आता है. चाहे वो उस कॉन्फिडेंस को फेक करे या कुछ भी करे, उसे देख के नहीं लगता. बट जितने भी मैचेस इंडिया हारी है, खासकर वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में, मैच स्टार्ट होते ही समझ आ जाता है आज नहीं होने वाला कुछ. उस शक्ल पे होता है उनके वो नर्वसनेस और वो बिल्कुल. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनका गेम में वो फर्स्ट बॉल से दिखता है वो. और बिल्कुल. खासकर केएल राहुल तो आई गेस मतलब 10 में से 5 मैच में तो अपनी शेल में चला जाता है. बिल्कुल. I think the way he broke his shell against Australia, that's what we would want him to continue. दैट्स And व्हाट इज don't नीडेड. let- बट वो अचानक से एक दिन अच्छा खेलेगा, फिर लगता है कि चलो अगले मैच में अभी वापस उसी कॉन्फिडेंस आएगा. बट यू नेवर नो वापस कब उसी शेल में वापस चला जाएगा. Absolutely, absolutely. And I think we all will have hours and hours to talk. जैसे गुलशन आपने कहा था, we can talk about the game all day. Of course. But Yeah, no doubt. but I think we have had a fantastic chat today. Love to have you on the podcast, and I am Thank you so much. 100% sure that this is only the first time and not the last time. क्योंकि Yeah, last time आने नहीं many देंगे. to come. Absolutely. Many to come. Because I think बहुत मजा आया to have you, and I think going forward we will have you a lot more and discuss a lot more cricket with you. Yeah, of course. Thank you so much. It was pleasure being here. अभी बस like you said, आते रहेंगे. बिल्कुल, absolutely. And Sanket, thank you so much, and thank you to all our viewers who are watching us all across the world. Let me just tell you, keep liking, sharing, and subscribing to our YouTube page. Remember, if you are the 1,000 subscriber, you are going to get amazing vouchers for yourself. So keep sharing the content and keep giving us your love, and keep sharing your comments with us as to what more you would want to know and hear on this DAFA News podcast. Thank you once again, Sanket, for being our in-house, expert. And Gulshan, lovely to have you.
today on the Dafa News Thank you so much. podcast. Same here. And we would definitely want to have you again soon back, and maybe discuss after the India Pakistan match whether our confidence Yeah. was right or wrong in the right place. Correct. All right. See you Thank you, soon. guys. Thank you. See Okay. you soon. And lovely to have you again. Bye. Thank you so much. All right. Bye Bye, bye, guys. Sanket. Take care. Thank Bye. you. Bye. 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 Bye.